Hello. How are you people? A very good morning to one and all. I know I'm a little bit late today. Very sorry for that. But let us move on with the class right now. So today we are going to study fun with magnets, and we are going to have a look at all the keywords, definitions, and the exercises given in the NCERT books. So are you people ready for that? Let us see who all are there online. Uh, Shamil, hello. Yusuf, hi. Abdul Samad, hello. Halish, hello. Manish Kumar, hello. Aditya Arya, hello. Rakesh Pal, Alok Raj, hello everyone. Hi. So, good morning to you all. Tripti is saying I am fine. Okay. How is everyone else? दूसरे लोग कैसे हैं? तो Naisha, how are you, Naisha? Hello. ठीक है. Rudra, how are you? How are you, Manish? Shine like the sun. No, class is still there and class has started now. So let us see who all are still here. Just let me know who all are still here. Hi, Nirja. Hello, Nirja. Hello, Onkara. Hello, Munna Bhardwaj. Hi. Hi, I am Isha. Hello, Isha. Hello, Rajiv Nayanpal. Akhileshwar Pal, right? And hi, hello, Varun. ठीक है. So cool. And Alok is saying my name is Sushravya. Halish is saying okay. Hi Sushravya. तो ठीक है. Should we start with the class now? अभी start कर दे. ठीक है. Nirja is saying how are you sir? I am well. Aditya Arya is saying hi. Hi Aditya Arya, how are you? A very good morning to you all. Sir, I am Nesha, not shine like the sun. Okay, Nesha, no problem. You are Nesha. Sir, do you like Avengers? यार, I actually read the very sad news. So like, ठीक है, let's not talk about sad things right now. Already 2020 is very sad. हेलो अभिनव एंड हाय अमी. तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो पहले वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट दी keywords and definitions, and just before that let me introduce myself. I am Mohammad Al Khalid. I did my bachelor's in design from IIT Guwahati. तो मैंने IIT गुवाहाटी में अपना ग्रेजुएशन किया है, ठीक है. सो आफ्टर दैट आई जॉइंड अन अकेडमी. और अन अकेडमी अगर आपको पता है तो it is the largest online learning platform in India. Cool. And we have classes for everything and almost everyone on YouTube and on the Unacademy app. We have classes for almost everything. Like right now you're at 6th standard, right? So we have for 6th standard, 7th standard, 8th standard, 9, 10, 11, 12, then JEE, NEET, all kinds of competitive exams, UPSC exams, and National Defense Academy exams. So for everything, whenever you might find something कि यार ये एग्जाम का पढ़ाई कैसे करना है, you just come to an academy. That's the way. Cool. So an academy is there and you have like amazing people who teach you. So आपको देखेंगे an academy तो like you will have amazing teachers who will teach everything in a very nice, very understandable manner at an academy. Cool. So now let us move on and I will tell you what exactly we are going to do today. Sir, is there mentee today? Amy, Telegram, Pranam sir, Pranam. Himanshu, my name sir, please my name. तो देखो, सबसे पहले what we are going to do is we are going to study the keywords. ठीक है? Keywords and definitions. सबसे पहले ये करेंगे हम. ठीक है? क्या करेंगे? Keywords और definitions. Keywords वही है जो हमने NCERT में किए थे. और keywords और definitions के बाद में NCERT exercises करेंगे. Exercises यानी आपके टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चंस हैं, we'll cover those, we'll have an answer for that. So you people keep on asking me, sir PDF मिलेगा क्या, sir PDF मिलेगा क्या, PDF कब आएगा, sir PDF कब आएगा. So here is the answer. Instead of PDF I'm taking a full lecture giving you proper exercises. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो. You can do whatever you want with this. ठीक है. तो सर आर यू एन IITian? यस बेटा, आई एम एन IITian. मैं IITian हूँ, मैंने IIT में पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आई विल बी एन IITian, राइट. तो दैट इज देयर. एंड जस्ट वन मोमेंट गाइस.
यू पीपल आर आस्किंग मी मेंटी होगा क्या, आप ही बताओ मेंटी होता है क्या? मेंटी मैं कब लेता हूँ? मेंटी आई टेक मेंटी ऑन द नेक्स्ट डे, राइट? अगर मैंने आज पढ़ा दिया, if I am teaching you one chapter today, when I teach you definitions and exercises, I take the mentee on the next day, क्योंकि हमने देखा कि time is not enough. So what we are going to do, we are going to have mentee tomorrow. Cool? Fun with magnets का mentee कल होगा हमारा. Himanshu, how are you? I am well. I am doing good. Rakesh Pal sir, today is mentee. No beta, mentee tomorrow will be tomorrow. Today आज क्या करेंगे? Keywords and definitions पढ़ेंगे, ठीक है? Then we will have a look at NCERT exercises. Then after all this is done, mentee tomorrow. Cool? Mentee हम कल लेंगे. Is that fine with everyone? सर कवर ICSE सिलेबस. ICSE सिलेबस ठीक है. लेट मी सी व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. ICSE सिलेबस का मुझे आई विल हैव टू चेक अप वंस विद अनअकैडमी के ICSE सिलेबस को कैसे हैंडल करना है, ठीक है? तो कूल. कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार. आई एम डूइंग रियली वेल. हाउ आर यू गाइज डूइंग? मुझे तो बहुत मजा भी आ रहा है. व्हेनेवर आई टीच यू गाइज, यू पीपल आर सो एंथुसियास्टिक. इट इज जस्ट सो मच फन फॉर मी टू टीच. तो डेफिनेशंस देखते हैं. डेफिनेशंस इस चैप्टर में बहुत कम है. We have very few definitions and question answers थोड़े हैं, but they are all very simple because ये चैप्टर का नाम ही यार fun with magnets है, ठीक है? तो it's a very fun chapter. बहुत मजा आता है मुझे ये चैप्टर में. आलोक राज, I am sad. क्यों sad हो यार? क्यों sad हो आप? Sir, can you clear my doubts? Yes, I can clear your doubts. तो definitions, ठीक है? definitions start करते हैं. First thing is keywords में compass. So what is a compass? compass क्या होता है भाई? compass is this. I have a compass with me. See, this is a compass. And what can this do? compass से हम क्या करते हैं? तो compass से we find directions. Yes or no? compass से हम direction find करते हैं because compass has a needle जो हमेशा north को point करती है, ठीक है? It is a magnetized needle, तो हमेशा north को point करती है. तो हम कहीं भी जाते हैं तो ओ ये needle north को point कर रही है, कहाँ पे हम देख लेंगे and we will find directions. तो अभी देखो इसका definition है. A compass is usually a small box, ठीक है? ये एक छोटा सा बॉक्स है, राइट? सिलेंडर लाइक सर्कुलर शेप में है, with a glass cover on it, ठीक है? A compass is usually a small box with a glass cover on it. देखो आपको यहाँ पे ग्लास कवर दिख रहा है ना? ग्लास या प्लास्टिक का कवर होगा because we need to see through it. उसके पीछे का दिखेंगे. अगर मेटल का कवर होगा तो पीछे का दिखाई देगा क्या? नहीं ना, metals are opaque. Glass is transparent, so that is why we have a glass cover on a compass. So a compass is usually a small box with a glass cover on it. एक छोटू सा डब्बा है कंपस जिसके ऊपर एक ग्लास का कवर है. A magnetized needle is pivoted inside the box which can rotate freely. ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर एक मैग्नेटाइज्ड नीडल है, ठीक है ना? जो उसके सेंटर से हमने पिवट करके रखी. तो इसके अंदर एक मैग्नेटाइज्ड नीडल है which can rotate freely. अगर आप कभी ये खोलोगे और इसको ऐसा ऐसे गोल घुमाने की कोशिश करोगे, it will go uneasily. वो ऐसा बैलेंस्ड है बेसिकली. नीडल इज लाइक दिस. एक छोटू सा इतना सा है ना, देयर इज अ पीस, आई डोंट नो विच मेटल प्लास्टिक समथिंग, एंड द नीडल इज बैलेंस्ड ऑन दैट, ठीक है? नीडल उसके ऊपर बैलेंस किया हुआ है, ऊपर से हमने उसको नहीं गिरने के लिए लॉक कर दिया. तो अगर आप साइडवेज इसको करोगे, कितना भी घुमाओगे वो घूमेगा, ठीक है? तो इट्स फ्री टू रोटेट. सो मैग्नेटाइज्ड नीडल है उसके अंदर विच कैन रोटेट फ्रीली. Naisha is saying I have a compass with me here. Great Naisha, बहुत अच्छे. नव्याश क्या हुआ यार? मैं इग्नोर थोड़ी कर रहा हूँ. क्या बोला नव्याश ने? Navyash sir, take my name. I am a new student. Okay, hello Navyash Verma. Welcome to my class. Welcome to Unacademy. बहुत बहुत बढ़िया आप यहाँ पे आए. I am happy that you are here. Sorry sir, I have to go. क्यों जाना है मनीष? तो सर हाउ आर यू? आई एम वेल एंड आई कैन क्लियर योर डाउट्स. जो भी पूछ रहा है सर कैन यू क्लियर डाउट्स? यस आई कैन क्लियर योर डाउट्स. टाइप करके पूछ लो. माई कंपस इज प्लास्टिक कवरिंग. क्या कंपस का कवर प्लास्टिक का भी हो सकता है, ग्लास का भी. इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है? जनरली ग्लास का होता है, इसीलिए ग्लास है. यू कैन राइट के है ना, इट हैज अ ट्रांसपेरेंट कवर. ग्लास कट करके आप ट्रांसपेरेंट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? यहाँ पे आप ग्लास कट करके
ट्रांसपेरेंट भी लिख सकते हो, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। इज दैट फाइन एवरीवन? सर आई कांट अंडरस्टैंड, सर ये चैप्टर स्कूल में नहीं पढ़ाया है, क्यों नहीं पढ़ाया है भाई? बहुत इतना अच्छा चैप्टर तो है ये। तो हाँ, तो अभी मैंने तो पढ़ा दिया ना, मेरा वीडियो जाके देख लो, दैट इज इनफ। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है चैप्टर, मैंने मैग्नेट्स ला के सारी चीजें करके बताई है, ठीक है। सो व्हाट इज कंपास? कंपास इज बेसिकली अ डिवाइस जिसके अंदर एक नीडल होती है, ठीक है। दिस इज अ नीडल इनसाइड इट। देखो इसके अंदर एक नीडल दिखाई दे रही है ना, उसको रेड कॉर्नर है। बेसिकली दैट नीडल ऑलवेज पॉइंट्स, द रेड पार्ट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो उसका हम डेफिनेशन दे रहे हैं अभी। कंपास क्या है पता करने के लिए आप मेरा क्लास देख लो, अगर आपने क्लास अभी तक नहीं देखी हो तो जस्ट सर्च फन विथ मैग्नेट्स अनअकैडमी मोहम्मद अल खालिद, ऐसे सर्च करो, आपको मिल जाएगा, यू विल फाइंड इट। कूल। सो it is used to find directions as the needle indicates the north south direction when it comes to rest। अभी ये घूम रहा है राइट, ऐसे थोड़ा थोड़ा अगर हम नीडल लेंगे तो जस्ट let the needle stop, let the needle come to rest। नीडल एक टाइम जब घूमना रुक जाएगा, देखो अभी ऐसे 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 कुछ भी कर रहा है, once it stops rotating, ठीक है ना, ऐसा रखना चाहिए। एक्चुअली मैं ऐसे स्ट्रेट कर रहा हूं तो आपको नॉर्थ साउथ नहीं दिखाई देगा, तो it will always point in the north south direction, और the red part है, the red part will point towards the north direction। so इसको compass बोलते हैं। compass is a small box with a glass cover on it, it has a magnetized needle which can rotate freely, it is used to find directions as the needle indicates the north south direction when it comes to rest। अगर आप चाहिए तो ये when it comes to rest को you can just cut it down, you need not write this, ठीक है। ये क्लियर हो गया? प्रियांशु इज सेइंग सर ये इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, मैंने इसमें ये चैप्टर में आपको पूरी इतनी लंबी एक स्टोरी भी सुनाई है बिगिनिंग में। सो जस्ट चेक आउट दिस चैप्टर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चैप्टर का नाम ही है फन विथ मैग्नेट्स, सो जस्ट इमेजिन कितना फन होगा, ठीक है। तो कूल, अभी नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन मैग्नेट। व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट बेसिकली वी यूज मैग्नेट, सी दिस इज अ मैग्नेट, ठीक है। ये एक मैग्नेट है, मेरे पास एक छोटा सा मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट। व्हाट कैन इट डू? इफ आई ब्रिंग समथिंग मेटालिक नियर इट, ठीक है, मैं उसके पास कोई मेटालिक चीज लेके आता हूँ, लेट मी ब्रिंग समथिंग मेटालिक नियर इट, या फॉर एग्जांपल आई हैव वन मोर टाइप ऑफ मैग्नेट। देखो मेरे पास ये ऐसा cylindrical magnets भी हैं, these are also magnets, right? if I bring a coin near it, it will stick, वो चिपक गया, right? चिपका कि नहीं चिपका? चिपक गया। so magnets are substances having the property of attracting iron, ठीक है। आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को ये लोग अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट वेरी फ्यू मेटल्स, ये सारी चीजों को अट्रैक्ट नहीं करते, मेनली आयरन को करते हैं, कोबाल्ट और निकल, ये तीन मटेरियल्स हैं जिनको ये अट्रैक्ट करते हैं। यू नो व्हाट, आई विल जस्ट राइट डाउन कोबाल्ट एंड निकल एज वेल हियर। आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, आई हैव एडेड इन द डेफिनेशन, ठीक है। So now you can see that the substances having the property of attracting iron, nickel and cobalt are called magnets, ठीक है। आयरन, निकल एंड कोबाल्ट मेटल्स के नाम है। आयरन आपको पता है ना, लोहा, लोहा को हम आयरन बोलते हैं, वैसे ही लोहे की तरह निकल भी एक मेटल है और कोबाल्ट भी एक मेटल है। तो मैग्नेट्स ये तीन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। आयरन, निकल एंड कोबाल्ट को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। Sir, the screen is blank. So yeah, I was editing the iron, nickel and cobalt. That is why the screen went blank for a moment. And now I am back. So sir, my name is Radhika sir, and Umar Khayyam is saying I am new sir.
नहीं यार, I remember you were there in one of the previous classes as well, Umar Khayyam. You did a mentee, right? You were there in one of a mentee. Munna Bhardwaj, I am also a new student. Okay, hello, Munna. Sir, please speak in English. Okay, ठीक है. Edu Lavada, I will speak in English. So, what happens is magnets are substances having the property of attracting iron, nickel and cobalt. So, the substances which attract iron, nickel and cobalt are called magnets. ठीक है? इतना सा ही definition है. That is the definition of magnets. If you want to write extra, if you want to write a little bit more about them, then you can write that opposite poles of two magnets attract each other, whereas similar poles of magnets repel one another. So what happens is opposite poles of a magnet, ठीक है? Opposite poles as in magnet has two poles, north pole and south pole. Yes or no? So opposite poles means north pole of one magnet and south pole of another magnet will attract each other, and similar poles will repel, means north pole of one magnet, north pole of another magnet will not attract, they will repel, they will push each other away. ठीक है? तो आपका actual definition is only this much. This is the actual definition. If you want to write extra, you can write the second sentence as well. ठीक है? So substances having the property of attracting iron, nickel and cobalt are called magnets. Opposite poles of two magnets, opposite poles as in north pole of one magnet and south pole of another magnet will attract each other. Similar poles of magnets will repel each other. That is, south pole of one magnet and south pole of another magnet, they will repel each other. ठीक है? Is this clear, everyone? Yes sir, you not forget me. Yeah, obviously I am not going to forget you, Umar Khayyam. I try not to forget any students. Dream IIT Bombay, Abhinav. Yee! Hi Abhinav. Sir, I have some doubts. Can you clear it, sir, please? Yes, I can clear your doubts. Please ask them. Ask them. Type them and ask them at the end of the lesson. Okay? We will complete all the exercises and then ask the doubts. Maher Mohammed, hello sir, I am first time attending an Unacademy class, sir. Hello sir, are there any previous classes on this chapter? So first of all, hello Maher Mohammed, welcome to Unacademy. This is your physics class and I am glad that you are here. So we have actually completed the syllabus. You can find all the videos on Unacademy channel. ठीक है? Unacademy Class 6 channel में you can find all the videos of science, maths, English. Like for science, we have completed the syllabus. So this right now what we are doing is we are going to the definitions and NCERT exercises, textbooks exercises and definitions. So in a way, this is a revision kind of thing, and how to answer the questions, that also you are going to learn in this one. But for the actual explanation of the chapter, for the actual lecture and actual experiments which we did in the chapter, go and watch the video. Just go to the channel and search for Fun with Magnets Unacademy and you will find the previous video. Cool? ठीक है? तो सर रिपल मीन्स टू पुश ईच अदर अवे, एक दूसरे को ढकेल देंगे. ठीक है? तो रिपल ऐसा होता है. सी राइट नाउ दीज मैग्नेट्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. ठीक है? ऐसा पास में आ जाता हूँ. इफ आई टर्न वन ऑफ देम अवे, आई कैन नॉट पुश देम टुगेदर. इट विल इन फैक्ट गो फर्दर अवे. वो दूर चला जाएगा. सी ओके, पलट के वापस आया है बट वो पलटेगा नहीं. इफ वी हैव बार मैग्नेट्स, इट विल पुश वन अनदर, राइट? सो दैट इज कॉल्ड repulsion. Repel करता है. So let us go to the next thing, magnetite. What is magnetite? So magnetite is actually a naturally occurring magnet. There is a rock, ठीक है? There is one rock which is called magnetite and it is a natural magnet. ठीक है? That rock itself acts as a magnet. Magnetite is a naturally occurring magnet. ठीक है? And it contains iron. So why is it a magnet? It's a magnet because it is an ore of iron. It contains iron. Also, some people believe that magnetite was discovered in a place called Magnesia. ठीक है? So it was probably discovered in Magnesia, which is there in Greece. So magnetite is a naturally occurring magnet is the important thing here. यहाँ पे सबसे important ये है कि
Magnetite is a naturally occurring magnet. It is a rock, it is a mineral which is also a magnet and it contains iron. ठीक है? हिमांशु सिंह सर प्लीज हिंदी. ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश आई विल एक्सप्लेन इन बोथ. तो मैग्नेटाइट एक पत्थर है जो एक रॉक है, एक पत्थर है जो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है. ठीक है ना, एक नेचुरल मैग्नेट है. अगर आपको मैग्नेटाइट कहीं भी मिल गया, पत्थर पहाड़ पे कहीं भी, तो इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट. इट विल अट्रैक्ट पीसेस ऑफ स्टोन. वो पीसेस ऑफ आयरन, उसको भी आप आयरन को अट्रैक्ट करने यूज कर सकते हो क्योंकि वो एक मैग्नेट है. वो और वो नेचुरली होता है, एक पत्थर होता है बस, उसका नाम मैग्नेटाइट है. ठीक है, उसके अंदर आयरन भी होता है. और ये मैग्नीसिया बोल के एक जगह है. सी देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीसिया एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन मैग्नीसिया. मैग्नीसिया में डिस्कवर हुआ था बहुत पहले. सर आपने कल 7th का क्लास नहीं लिया था, कल संडे था या ना यार, सो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट टेक द क्लास यस्टरडे. फाइनल डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डेफिनेशन देखते हैं. दिस इज द लास्ट डेफिनेशन. ठीक है, actually these are two definitions, I just combined them into one. So we know that every magnet has two poles, right? Every magnet has two poles. हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. So if we hang a magnet, अगर हमने एक मैग्नेट लिया और उसको ऐसे लटका दिया हवा में, स्ट्रिंग से बार मैग्नेट को हमने लटका दिया. If we suspend a magnet with a bar magnet with a string, ठीक है, कैसे? What if we, for example, if this pen is a magnet, we'll tie some string and we'll just suspend it in the air like this. ठीक है? नहीं, I'm not going to risk making my pen fall. But you understand, right? How do you suspend a magnet? उसको ऐसे लटकाना है बस string से. So the end of the magnet, which points towards the north of the earth. The end of the magnet which points towards the north is called north pole, and the end of the magnet which is towards the south is called the south pole. As simple as that. अगर आपने एक मैग्नेट को ऐसे लटकाया हवा में, स्ट्रिंग से बांध के लटका दिया, तो थोड़ी देर वो घूमेगा, it will rotate for some time and then it will come to rest. वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा. ठीक है, ऐसा हो गया. It will stop rotating after some time. वो रुक जाएगा. So the side of the magnet which is pointing towards the north of the earth को जो magnet point कर रहा है, the side of the or the end of the magnet which is pointing towards the north is called north pole of the magnet, and the end of the magnet, the opposite end of it, which is pointing towards the south, is called the south pole of the magnet. ठीक है? Sir, what is bar magnet? Bar magnet is a type of magnet which is in shape of a bar. उसको बार मैग्नेट बोलते हैं. ठीक है, मेरा लेक्चर देखो, गो एंड वॉच माय लेक्चर. आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट अ बार मैग्नेट इज इन देयर. हाय सर, रिमेंबर मी? आदर्श हियर. ये यस वी नो एम. आई रिमेंबर यू आर आदर्श. वेलकम टू द क्लास. And who discovered magnet? See, it was discovered in very ancient time. Probably by a guy called Magnus. Okay, इसका story मैंने सुनाया है. I have narrated the story. It's a very interesting story in the video of the explanation. Cool. Who discovered magnets बोल दिया था. हिमांशु रे, हिंदी is our national language. No बेटा, हिंदी is not our national language. We have actually 22 official languages of India. So Hindi is just one of them. Okay. So, sir, please teach us civics because your teaching skills are too good. See, we have another amazing teacher for civics. Okay, I am teaching only science for now. मुझे civics उतनी नहीं आती है यार. Civics मुझे उतनी ज़्यादा नहीं आती. ठीक है ना? You have an amazing teacher who is teaching civics. I think Arima ma'am is teaching you civics, right? Sir, please. Sir, who discovered compass? Really, sir, have it out. Who discovered compasses? See, it was not one person who discovered compass. They found out in olden days, very like hundreds and thousands of years ago, they found out that magnets points toward only the same direction all the time. So they used to hang it and use it as a compass. Then later on, after a few years, they made it nice. They put it in a bowl of water, and then they made a needle out of it. And now we have a compass which looks like this.
ठीक है. So it's a long process which happened over time. So it's not like one person discovered this. So अभी we are going to start the exercises. ठीक है, अभी क्या करेंगे हम? We are going to start the exercises right now. तो exercises में क्या करेंगे? First question is fill in the blanks. ठीक है, अभी हमें क्या करना है? We have to fill in the blanks. तो artificial magnets are made in different shapes such as, बहुत shapes में बनते हैं यार. We can just write any shape which we want. ठीक है, I have given you many examples of artificial magnets. You can write whatever you want. Different shapes such as bar magnet. ठीक है, bar magnet. और कौन सा होता है? बार मैग्नेट होता है, सिलेंड्रिकल होता है. ठीक है, यू कैन राइट सिलेंड्रिकल मैग्नेट. एंड हॉर्स शू इज ऑल्सो देयर. हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है, हॉर्स शू मैग्नेट इज इन अ शेप ऑफ यू, रिमेंबर. ठीक है, बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट एंड हॉर्सशू मैग्नेट. यू कैन राइट देयर व्हाटएवर शेप magnet exists in, you can write that shape over here. So that is the first thing. Cool, that is the first answer. रिंग मैग्नेट भी आप लिख सकते हो यहां पे. ठीक है, तो cool. Sir, tomorrow what topics is Menti? Tomorrow same topic Menti. ठीक है, same topic, fun with magnets, full chapter Menti tomorrow. So now second question, the materials which are attracted towards a magnet are called, what are the materials which are attracted towards magnets are called? They are called magnetic materials. ठीक है, magnetic materials. The materials which are attracted towards a magnet are called magnetic materials. Very simple answer. ठीक है, other examples are perovskite, ferrite and columbite. Those are not shapes of magnets beta, those are types of magnets. ठीक है, वो shape नहीं है magnet का. ठीक है, ball ended magnet is another example of a shape of a magnet. ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप. Sir, today 9:45 a.m. class was not there. देखो, for any information on the class, you join the Telegram channel. आप Telegram channel join करो, वहां पे आपको information मिल जाएगी कि क्लास आज होने वाली है, नहीं होने वाली है, क्यों नहीं होने वाली है. Everything like that you will find out in the Telegram channel link. उसका आपको link description में मिल जाएगा. ठीक है, विलियम थॉमसन फर्स्ट बैरन केल्विन ड्रीम आईआईटी बॉम्बे बोल रहा है कि कंपस उसने बनाया था. So that is the compass, that is the design of the compass like this, but many people had different variations of compass even before that. ठीक है बेटा, उससे पहले भी they were very rudimentary types of compasses. जैसे मैंने आपको बोला कि just hanging a magnetite with a thread, that also acted as a compass, right? तो ये आप जो बोल रहे हो compass, that is the compass which looks like this. But compass in many different forms has been existing over thousands of years. तो ठीक है, अभी है ना हम नेक्स्ट करेंगे. पेपर इज नॉट अ डैश मटेरियल. पेपर कौन सा मटेरियल नहीं है भाई? देखो, दो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स मैग्नेट के चैप्टर में हमें दो टाइप का देखना है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो अभी अभी जल्दी से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. आई हैव अ पीस ऑफ पेपर ओवर हियर. मेरे पास क्या है? यहाँ पे एक पेपर है एंड ओ बाय द वे दिस इज द पेपर जिसके ऊपर स्टार्स है. ये स्टार्स वाला पेपर है जो मैंने दिया था. यू कैन सी वन ऑफ द स्टार्स इज स्टिल हियर, राइट? तो कल के मंडी में मिलेगा, जो भी जीतेगा उसको ये वाला स्टार. ठीक है, काफी बड़े बड़े स्टार्स है वैसे ये. सो लेट अस सी इफ इट इज मैग्नेटिक. ये चिपकता है क्या मैग्नेट को? लेट अस सी इफ द मैग्नेट कैन लिफ्ट इट. नो, नहीं कर रहा. व्हाट डज दैट मीन? इट मींस दैट पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल.
ठीक है, पेपर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। शुड आई मूव अहेड नाउ? यस, we'll go ahead. In olden days, sailors used to find direction by suspending a piece of, क्या करते थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, डायरेक्शन कैसे पता करते थे? दे विल जस्ट हैंग अ नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, एक नेचुरल मैग्नेट लेते थे और उसको एक थ्रेड से लगा देते थे, तो विल जस्ट राइट नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल magnet, or they would even use magnetite. Magnetite is also a natural magnet, right? Magnetite, ठीक है? Yes, 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 absolutely correct. चलो अभी हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं, विल गो टू द, सर आर यू इन टेलीग्राम? यस बेटा, टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप इजीली फ्रॉम देयर, ठीक है। तो हाँ, और क्या बोला आप लोगों ने? नेचुरल मैग्नेट इज करेक्ट, यस यस यस। हैदराबाद, सिकंदराबाद, मोहम्मद सर जिंदाबाद, ओ माय गॉड, वाओ, थैंक यू फॉर सेइंग दैट बेटा, बट ऐसी बातें मत बोलो यार, आई फील एम्बैरेस्ड व्हेन यू से सच थिंग्स। यस, तो अभी हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, मैग्नेटाइट मैंने कंप्लीट करना ही भूल गया मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। एक मैग्नेट को कितने पोल्स होते हैं हमेशा? देयर इज अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सो हाउ मेनी पोल्स आर देयर? नॉर्थ पोल 1, साउथ पोल 2, सो अ मैग्नेट ऑलवेज हैज 2 पोल्स, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, ये तो आप बस मैग्नेट सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा मैग्नेट को कितने पोल है। मैग्नेट ऑलवेज हैज 2 poles. There won't be any magnet which has only 1 pole, or there won't be magnets which have 3 poles. So magnets always have 2 poles. Aditya Menon, is there Menti? Menti is tomorrow. Tomorrow we have a Menti. ठीक है, on the same topic we have Menti tomorrow. Now the second question, true and false. True and false करते हैं. A cylindrical magnet has only 1 pole. True or false? मुझे आप लोग ही बताओ. Cylindrical magnet को कितने poles होते हैं? सॉरी, एक ही पोल होता है क्या? हेलो सर, अभिनव इज सेइंग अ मैग्नेट ऑलवेज हैज 2 पोल्स, यस। तो दिस इज ऑब्वियसली फॉल्स, मैंने अभी बोला है कि मैग्नेट्स को 2 पोल होते हैं, सो अ सिलिंड्रिकल हैविंग ओनली 1 पोल इज फॉल्स, यप। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। यस, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। नहीं भाई, फॉल्स है, मैग्नेट्स तो डिस्कवर ग्रीस में नेचुरल मैग्नेट्स हुए थे, सो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर नॉट डिस्कवर्ड इन ग्रीस, ठीक है। फॉल्स अगेन, यप, इट इज फॉल्स अगेन। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, ये बोलो आप लोग मुझे, ट्रू एंड फॉल्स है क्या? जल्दी से बता दो कि सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट्स repel each other. बताओ बताओ बताओ, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। Yes, similar pole of magnets repel each other, so this is absolutely true, ठीक है। Then we have maximum iron fillings stick in the middle of a bar magnet when it is brought near them. तो अगर हम एक बार मैग्नेट लेंगे और उसके ऊपर छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स आर व्हाट? आयरन फिलिंग्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, ठीक है। So when we put iron fillings on a magnet, which side gets more, the middle or the ends? It is always the poles. Poles ज़्यादा attract करते हैं, ठीक है ना? So this is false. So actually maximum iron fillings stick to the poles of a magnet, not to the middle of a magnet, ठीक है? So this is again false. सर हम लोगों को पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? या यू विल हैव टू डाउनलोड टेलीग्राम ऐप, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक व्हाट्सएप की तरह एक ऐप है, बट देयर कैन बी मोर पीपल इन टेलीग्राम ऐप, दैट इज व्हाई वी हैव टेलीग्राम ऐप, ठीक है।
तो yeah, this is also false. Bar magnets always point towards north south direction. हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है ना बार मैग्नेट. ट्रू एंड फॉल्स? एब्सोल्युटली ट्रू. सही बोला है आप लोगों ने. वेल डन, नाइस. किस किसने बोला है भाई ट्रू? लॉट ऑफ यू हैव सेड ट्रू, लॉट ऑफ यू हैव सेड ट्रू, सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. मनोज ने ट्रू बोला है, नव्याश ने ट्रू बोला है. ठीक है. तो नाउ a compass can be used to find east-west direction at any place. Can we find out east and west direction using a compass? Yes, we can. We can find east and west direction using a compass because see, I have a compass over here. You can see it has like north, south, east, west, everything. The needle points towards the north, but एक time north पता चल गया तो east और west भी we can find, right? If we know north, if we know where the north is just by looking at the needle, we can obviously find where the west is there, where the south is there, where the east is there, right? So this is also true. This is absolutely correct. Neerja has said true, Srinivas has said true, Shamil has said true, Isha has said true, Mahir has said true, lot of you have said true, Abhinav has said true. ठीक है, cool. So this is true. आप लोगों को तो बहुत जल्दी आ गया यार, मुझे पढ़ाने का जरूरत भी नहीं है. रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल. इज रबर अ मैग्नेटिक मटेरियल? रबर मैग्नेटिक होता है क्या? डू आई हैव एनीथिंग मेड अप ऑफ रबर ओवर हियर? नहीं, मेरे पास अभी रबर का, हाँ, सी आई हैव अ बलून. ठीक है, बलून इज मेड अप ऑफ रबर. इज इट अट्रैक्टिंग? देखते हैं. इज द मैग्नेट अट्रैक्टिंग इट? नो, इट्स नॉट अट्रैक्टिंग. व्हाट डज दैट मीन? रबर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, सो दिस इज फॉल्स. ठीक है, सही बोला. अग्रिमा करेक्ट, मनोज करेक्ट, कुमारी आंचल करेक्ट, न्यूटन साइंस करेक्ट, आयुषी करेक्ट. ठीक है, यू ऑल आर करेक्ट. ठीक है, इट इज द करेक्ट आंसर इज फॉल्स. सर कैन यू टीच ऑल्सो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स? यस आई कैन. लाइक दिस इज रिलेटेड टू दैट ओनली, राइट? So now coming to the proper questions. It was observed that a pencil sharpeners get attracted by both the poles of a magnet although its body is made of plastic. ये बोल रहा है, they are saying that there was a sharpener which was made up of plastic, but it was still being attracted by a magnet, and not just by north pole or not just by south pole. It was attracted by both the poles of a magnet. आप इस साइड से चेक करो तब भी अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरी साइड से चेक करो फिर भी अट्रैक्ट कर रहा है. So name a material which might have been used to make some part of it. तो ये हमसे पूछ रहा है कि तो कौन सा पार्ट होगा जो है ना कोई मटेरियल से बना होगा, एक टाइम गेस करो. तो यहाँ पे we are going to have a look. So a sharpener has a blade, right? Is the blade made of plastic? No, blade is made up of some metal. So maybe the blade was made up of iron, and iron is a magnetic material, so it will be attracted by both poles of the magnet as well. Yes or no? Iron magnetic है तो वो magnet से attract होगा. Sharpener is in plastic but the blade is made up of iron. So we'll give an answer. Iron may have been used to make the blade of the pencil sharpener. ठीक है, उसने बोला कि name a material, material भी पूछा है तो iron हमने material बोल दिया. There have been ways to use some part of it, तो हमने part भी बोल दिया कि blade बना होगा. ठीक है, we gave the answer for the material as well as the part. So iron might have been used to make the blade of the sharpener, hence it was attracted by both the poles of a magnet. That is why, because iron is magnetic, it was attracted by both poles of a magnet. समझ में आ गया? ठीक है, yes, great, all of you are answering. कुमारी आंचर, माहिर मोहम्मद, अभिनव सिंह, शामिल, दीपा पोरवल, नीरजा, ठीक है, नव्या, ठीक है, आप लोगों ने सबने, आयुषी परिधा ने सबने बोला है करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट. Column 1 shows the different positions in which one pole of a magnet is placed near that of another. Column 2 indicates the resulting action between them. So see, we just have to see over here, if these are two magnets, north and north, will they attract or repel? We have to write over here. Will they attract? And hello sir, how are you? Take some water. I am well beta, I will take some water. Thanks for reminding me. Thank you Himanshu Raj for reminding me to have some water. So north to north is repel or attract. जल्दी से मुझे बता दो, repel होगा कि attract होगा? First one. Opposite sides attract
same sides repel, so north to north will repel, ठीक है? So this would be repulsion. When they repel we call it repulsion, ठीक है? So they are repulsion right now. Repulsion की spelling सही है क्या? Is this the correct spelling of repulsion? I'm not sure actually. Let me just check the spelling. Yeah, the T should not come over here. This is the wrong spelling of repulsion, okay? Textbook का spelling was wrong. So it will repel. And attraction कब होगा? North and south जब आएगा, they will attract because opposite sense attract, right? North और south, south and north आएगा तो they will attract. ठीक है? Are you people following? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? This clear, guys? ठीक है. Now south and north, will they attract or repel? They will attract because opposites attract. Opposite attract होगा. Whenever it is opposite, वो attract करेगा. जब भी opposite होगा, वो attract करेगा. So there will be an attraction. There will be an attraction. And what will be the repulsion over here? Repulsion कब होगा? If we have another south over here, because same will, when it is same poles will repel each other. दो magnets का हमने south लगा दिया तो they will push each other away. वो एक दूसरे को ढकेल देंगे. They will not get attracted. दो south आया तो they will repel. So it will be repulsion. ये clear है सबको? Is everyone clear with this? ठीक है. अगर ये clear हो गया, is this crystal clear? तो मुझे बोल दो, मैं अगले क्वेश्चन में चला जाऊंगा. ठीक है? Menti है क्या सर? No रुद्रांश, Menti is tomorrow. Tomorrow we will have Menti on the same topic. ठीक है? Fun with magnets, Menti is tomorrow. Yes, it is clear now. Write any two properties of a magnet. You have to write any two properties of a magnet. तो हमारे पास यहाँ पे properties of the magnets मैंने लिख दिए हैं. So I have written three properties of the magnets. You can choose any two, whichever you like, and write in the exam. So first one is a magnet has two magnetic poles, north pole and south pole. So every magnet, ठीक है, each magnet has two magnetic poles. Each magnet has two poles and we call them south pole and north pole. तो ये हो गया one, एक हमने कर दिया. And let us have another one now. A freely suspended magnet always aligns in north-south direction. So freely suspended means if we tie a thread and hang it like this. So it's freely suspended, right? It can rotate. अगर हमने इसको एक धागे से लटका दिया तो फ्री लटक रहा है ना, उसको कोई और चीज तो रोके हुए नहीं है ऐसे घूमने से. तो when you freely suspend a magnet, जब आप ऐसे ही लटका दोगे freely, so it will always go in the north south direction. वो आके ऐसे ऐसे घूम के हमेशा north south direction में आके वो रुकेगा. So this is the second important property of a magnet. ठीक है? So today is the first class of fun with magnets chapter. No बेटा, fun with magnets मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया है. This is the revision of it. This is the NCERT exercises and definitions. ठीक है? Now we will have a look at the third property. Opposite poles of two magnets attract each other. अगर हमने दो magnets लिए, if we take two magnets, the opposite poles of the magnets, for example this is north pole, this is south pole, they will attract each other. ठीक है? वो attract करेंगे. If we take same poles of two magnets, like यहाँ पे south pole है, यहाँ पे south pole है, they will repel each other. They will push each other away. If I take north pole, it will repel. ठीक है? If I take south pole, it will repel. If I take one north, one south, they will attract. If I take one south, one north, they will attract. So that is the third property of a magnet. So you can write any two or write all three of them. Write one extra. ठीक है? It's very easy only, right? Sir, can you teach coding lessons? Please tell sir, and who explaining? I don't take coding. मैं coding नहीं लेता हूँ. I take only physics class. I take only science classes. Okay? How are you, sir? I am doing well, yaar. I am doing really great. But let us finish this now. ठीक है? Where are poles of a bar magnet located? See, this is a bar magnet. ठीक है? This is a bar magnet. So where are the poles located? So this is the pole. This is the south pole and this is the north pole. The ends of the magnet, ठीक है? Poles of a bar magnet are located at its ends. ठीक है? End means corners पे. उसका जो end है,
So on the poles are north pole and south pole, both are located at the ends of a bar magnet. Is this clear everyone? ये तो सबको पता है ना? कोडिंग मैं नहीं पढ़ाता यार, आई डोंट टीच कोडिंग, एक्चुअली आई डोंट टीच कोडिंग, आई टीच ओनली साइंस. सो एंड ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? एवरीवन नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. सो लेट अस सी a bar magnet. So apparently there is a bar magnet now. There is a bar magnet which has no markings. How will you find out where is the north pole located? How will you find out? If you have a bar magnet, it does not have north or south written on it. How will you find which is the north side, which is the south side? Very easy. What you will do, you will tie a thread. You are going to tie a thread ऐसा around the magnet and you will suspend it. ऐसे लटका दोगे. When you hang the magnet, after some time when it comes to rest, if the whatever side is pointing towards the north of the earth का जो north side को point कर रहा है, that will be the north pole of the magnet. So it is an important property, right? We just study what is the property of like a freely suspended magnet always aligns in north-south direction, right? So an important property of magnet is that a freely suspended magnet always aligns in north-south direction. So if we suspend a magnet using a thread, the end pointing towards the north will be the north pole of the magnet. अगर हम एक thread लेके magnet को suspend करेंगे, लटकाएंगे, तो जो magnet का part north की तरफ आके रुकेगा, that will be the north pole of a magnet. ठीक है? If we hang a magnet by a thread, so whatever end of the magnet is pointing towards the north, it will be the north pole of the magnet. Is that clear everyone? Sir, please end the class at 12 PM. We have biology class. ठीक है, I am going to end it right now. We'll end it now. ठीक है? We have only 3 questions. Cool? So a compass is kept at the place where we wish to know the directions. ठीक है? A compass is kept at the place where we wish to know the directions. So how do we find like directions using a compass? Very simple. Wait, इससे पहले का कोई क्वेश्चन है क्या जो मुझे करना था? हाँ, if we have an iron strip, अगर हमारे पास एक iron strip है, I have a piece of iron, how will I make a magnet out of it? Very simple. What I will do is I will take a bar magnet. ठीक है? I will take a bar magnet and I will put one of the poles. I will choose north pole या south pole, any one pole I will choose. ठीक है? And I will throughout the process I will use only that pole and I will keep that pole. For example, I chose north pole. ठीक है? North pole लिया and I will keep it at one end of the iron piece. Iron का जो strip है, I will put one end and start rubbing it. ठीक है? Without lifting the magnet, I will move it from along the length, like यहाँ से यहाँ तक I will move it. ठीक है? Without lifting it up. ऐसा टॉप से like left to right ऐसे करूंगा. Then I will lift it up, go back to the first position and then you know put like again bring it to the same position. तो मैं यहाँ से यहाँ तक लाऊंगा, then I will lift it up, फिर उठा दूंगा magnet, then I will start from here again, फिर यहाँ से करूंगा. I will not go back like this. उसको घस रहा हूँ ना, I am rubbing it. So I will do it only in one direction, lift the magnet, go back to the first position and do it again and again. So we will lift the magnet, bring it to the same point of the iron bar from which you began. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. So we will do the same process again and again and we will do this 30 to 40 times. हम ये करेंगे. ठीक है? How, for example, if I want to turn this spoon, अगर ये एक metal spoon है, if I want to turn this into a magnet, what I am going to do? I am going to take this to this, then I will lift it up, then I will do this. Actually flat वाले side पे करना है. ऐसे, 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 ऐसे. I am not going to rotate the magnet. ठीक है? I am not going to rotate the magnet. I am not going to do this. ऐसे ऐसे नहीं करना. I will do it like this. Cool? But it should be a metal spoon or metal piece of metal. ठीक है? So ठीक है. Second last question. How is a compass used to find directions? Compass को how do we find directions on a compass? So here you see this is a compass, right? And one side of the compass needle will be always red in color. ठीक है?
one side of the needle will be red in color. This is a black and white image, so you cannot see much here, but one side of the needle is red in color and it always points towards the north direction. Again, notice that it has a dials. यहाँ पे degrees लिखे हुए हैं, right? Can you see these? You can see that there are degrees written over here. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 ऐसे ऐसे करके पूरा 340 and this is the 0 again. This is 360 ऐसा. So there are written over here. Hi sir, I am Bhumika Sahu. Hello Bhumika Sahu and hi Adiyasha. तो अभी क्या करना है? How do we find directions is the compass is like wherever we want to find a direction, we'll keep the compass there first. ठीक है ना? We'll keep the compass. If I'm traveling somewhere, I need to have a compass over there. मैं घर में बैठ के वहां का direction नहीं find कर सकता. ठीक है? So first we keep the compass in the direction in the place where we want to find the direction. Second, so the needle, the magnetized needle, ठीक है, magnetized पहले आना चाहिए. So the needle indicates the north-south direction when it comes to wrist. ठीक है, ये पता है ना? The needle which is there, this needle is always in the north-south direction. ठीक है? This needle will point towards the north always whenever it's at rest, when it's not moving. ठीक है, we know this. So the compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at the same two ends of the needle. So अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना कि we have north, south written on the compass. Yes or no? Can you see? Compass में यहाँ पे N लिखा हुआ है. We have N written over here. We have S written over here. I will show you my compass. यहाँ पे मेरे compass पे भी आपको दिखाई दे रहा है, right? कि north और south लिखा हुआ है. Right, north and south are written. So what I will do, I will rotate the compass till the needle is at the north. ठीक है, एक second, I will just do it like this here and I will show it to you. I will wait for it to come at rest. So अभी देखो, it is pointing at the north. ठीक है, अभी नहीं point कर रहा है यार, ये थोड़ा see compass works when you keep it like this. You have to keep it on a flat surface. ठीक है, so we will wait till the north, the red part of the needle comes on the end of the compass. Now you can see that it has directions written on the dial. ठीक है, ग्राफ में आपको degrees दिखेंगे. So you just read those degrees and you can find the direction. ठीक है, it is as simple as that. ये clear हो गया? Sujata, yes, they will be same chapter only. ठीक है Sujata? Sir, will you take Menti? Not today, Menti will be tomorrow. Tomorrow Menti at 11 o'clock. ठीक है? Now the last question, final question guys, final question है. Final question में अभी हम करते हैं. Every day I come at 11 o'clock. ठीक है? 11 o'clock is the time. 11 to 12 is my class every day. So we have to match the following. Cool है? A boat get attracted towards the magnet. So if a boat is getting attracted towards the magnet, what does that mean? It means that the boat is made up of a magnetic material. ठीक है? So we will join these two. ठीक है? ये हो गया. A boat is made up of a magnetic material. That is why it's getting attracted by the magnet. ठीक है ना? अगर boat non-magnetic, if the boat is made from paper, will the magnet attract it? No. So it means the boat is made up of magnetic material. That is why it is being attracted. Second, it is saying boat is not affected by magnet. That means boat is not made from magnetic material. Boat magnetic material का नहीं बना हुआ है, इसीलिए उसको magnet attract नहीं कर रहा है. So boat is made up of non-magnetic material. तो अभी इसको join करते हैं. I will change colors. ठीक है, अलग अलग colors use करेंगे. Cool. ये वाला होगा second. ठीक है. Boat is not made up of magnetic material. Then third, boat moves towards the magnet if north pole of the magnet is brought near its head. So if there is a boat and we bring the north pole of the magnet near the boat and the boat starts coming, what does that mean? That means that there is a magnet inside the boat with south pole towards its head, because opposites attract, right? Opposite attract करता है, तो magnet जो बोट में होगा उसका साउथ पोल विल बी टुवर्ड्स इट्स फ्रंट. ठीक है, तो अभी इसको ज्वाइन करते हैं साउथ पोल वाले से. कूल, ये वाला आएगा यहां पे. ठीक है, दिस इज द वन.
then boat moves away from the magnet when north pole is brought near its head. नॉर्थ पोल अगर हम मैग्नेट का बोट को दिखाएंगे तो बोट मूव्स अवे, बोट दूर जा रही है. अर्जुन, आई एम नॉट टेकिंग मेंटी टुडे, मेंटी विल बी टुमारो, प्लीज डू नॉट स्पैम. ठीक है, तो नाउ बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इज हेड. मींस एक बोट है और इफ आई ब्रिंग अ बिग मैग्नेट which has a north pole of the magnet, if I bring, the boat moves away. मैं north pole ऐसे ला रहा हूँ, देखो I have north pole of the magnet, north pole ऐसे ऐसे आ रहा है and boat is moving away. North pole से ढका रहा हूँ, boat is going away. What does that mean? The boat also has a magnet with north pole in it, because same magnets repel each other, right? When they are same, they will repel, so they will push each other away. So let me draw the line now. What color should I use? I will use blue color. ठीक है, I will use a blue color. So यहां से आएगा North pole at his head, ये वाला. ठीक है, this is the correct one. Final one. Final अभी कौन सा बचा है? Boat floats without changing its direction. ठीक है, एक बोट है which does not change its direction. It's floating in water, it's not going to change its direction. What does that mean? It means that probably the boat itself is a long magnet, or it has a long magnet throughout its length. Because a magnet always, when it's freely suspended, हमने उसको thread से लटका दिया या पानी में रख दिया, so it will always be in north south direction, right? Will it go to east west direction? No, east west direction में जाएगा नहीं. The boat will always be in north south direction. So therefore the correct answer for that is, let me choose which color, purple color लेते हैं अभी. The boat has a small magnet attached to its length. ठीक है, यहाँ पे this is the correct answer for this one. Is that clear? ये सारे clear हो गए ना? Sir, all day on which time you come? Every day I come at 11 o'clock, 11 a.m. ठीक है, morning. So is this clear? ये सारे clear हुए कि नहीं हुए? जल्दी से मुझे बता दो. Are all of these clear? Are all of this clear? जल्दी से मुझे बताओ ये सारे clear हुए क्या? Then I will end the class. ठीक है, अगर ये clear हो गया तो then we can end the class. अगर doubt है किसी को तो पूछ लो. Clear? Is this clear or is this crystal clear? Crystal की तरह clear होना चाहिए. This should be as clear as a crystal. आप लोगों ने crystal देखा है कभी? A crystal is very clear, right? You can see through a crystal. So is it as clear as a crystal? Mahar Mohammed, thank you sir. Thank you so much Mahar for coming to my class, for paying attention. And Tripti saying crime and clear. I love crime and clear. Crime and clear is it's crystal clear and diamond clear both. So it's like crime and clear. Wow. So yeah, crystal clear, diamond clear. Pratiksha has doubts, please ask the doubts. If you have a doubt, ask the doubt or else we'll end the class. ठीक है? Cool, बाकी सबको clear है? Clear, crystal clear. Mahar Mohammed, thank you sir. Diamond clear. Well done Mahar. Let's have a high five everyone. High five. So thank you sir. So that is all for today, and thanks a lot. Thank you each and every one of you for coming to my class and paying attention in the class, because I love the students who pay attention in my class, who ask doubts. Okay, so that is nice. So go on, if you like the video, if you love this, if you understood the concepts, go and like the video, share the video, ask your friends to come and watch the video. Okay, ask the friends, classmates, relatives, cousins, जो भी है उनको बोलो यार क्लास में आ जाओ, कल मेंटी है. ठीक है, tomorrow we have a mentee and I want 100 people in my class. Can you people do that? Everyone get 5 people. अपने 5 दोस्तों को बुलाओ, सब 100 लोग हो जाएंगे. कैसे नहीं होंगे? ठीक है, so everyone try to get 5 people tomorrow. बोलो mentee है, fun with magnets में बहुत मजा आएगा and I will take a mentee tomorrow. ठीक है, करोगे क्या? Will you do it for me? Will you do it for me? मेरे लिए करोगे? ठीक है, so that is all. Bye people, that is all. So subscribe to Unacademy को subscribe करो. And mentee है ना, tomorrow we have a mentee. So I'll just write down mentee
tomorrow we have Menti and I want you all to get as many friends as you can, because Menti में ज़्यादा लोग जब होते हैं then we will have lot of fun. So should I fly now? Should I fly and hit the bell icon? ठीक है. What is magnetite? Magnetite is a rock. ठीक है. Magnetite is the name of a rock which is a magnet. ठीक है. There is a rock which is a magnet. ठीक है. It's a type of a rock which is magnetic in nature. It's a natural magnet. Its name is magnetite. Cool. So that is all. What time Menti? 11 o'clock. ठीक है. 11 o'clock. 11 o'clock. ठीक है. 11 o'clock को होगा. Now I will go and I will, what will I do? I will hit the bell icon. ठीक है. I'm going to hit the bell icon guys. जल्दी से देखो. 3, 2, 1. अरे मैं उड़ रहा हूँ यार. I want to fly, not the slide. Yeah. Ting 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 ting. Now I'll come back. I'm back in my place now. So that is all guys. I had a lot of fun teaching you. I love this chapter. I think you people also like this chapter. ठीक है? So that is all and bye bye. Bye everyone. Bye bye. Good night. Good afternoon or goodbye.